कैसे था ये सब अम्मा को हैंडल करना? She's a tall woman, She's a tall woman. independent. Well, I had my brother, my sister, बहन बहुत हम सब ने जितने अब्बा ने किया, भाई बहनों ने किया, my mother's closest friends. It was an interesting, beautiful experience almost कि जितना प्यार वो चाहती थी अपने लाइफ टाइम में उन आखिरी 9-8 महीनों में जितना उनको लाड प्यार मुझसे मिला, भाई से मिला, सबसे मिला. I'm glad she got that. There's so many instances where somebody passes away. तुमने उनको फिर घुट-घुट के प्यार किया और उनके साथ लेटी और हाँ वो सब क्या, हाथ पाँव सर मुंह चूमना, दबाना, नहलाना, बैठना, टाइम देना, खिलाना, वो सब हुआ फिर. एंड इट्स अनफॉर्चुनेट पीपल हु हैव लॉस्ट समवन एक्सीडेंट में जब अचानक से कोई चला जाता है ना, उसके बाद रिकवर करना मेरे बस से बाहर है. आई डोंट नो हाउ पीपल गेट ओवर दैट. दैट्स अ ह्यूज ट्रेजेडी एंड लॉस एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, आई एम श्योर, टू अपने आप को दोबारा उठाना and to continue with life. But when somebody is sick and you are prepared, then you get to say goodbye and you get to make up for all the things that you aren't able to do. जो भी सुलह करना है, अगर किसी से कोई लड़ाई है या जो भी, अब वो सब आपको उस चीज़ का मौका मिल जाता है. तो ये अल्लाह की तरफ से it was a नेमत and we're very grateful that we had, all of us had that experience because it brought the family closer. तो सही रहा. एंड अगेन लाइक अभी लोग कहते हैं, मेरी बहन कभी कहती है कि आप यू टू कोल्ड, कुछ तो मतलब कि चेक इन करो, हाउ इज़ एवरीवन आफ्टर ममा, ये वो. तो मैं हमेशा कहती थी आई व्यू डेथ एज पार्ट ऑफ लाइफ. पैदा होते हैं फिर आप वापस जाते हैं, नॉट नेसेसरली बुढ़ापे में. एट एनी टाइम व्हेन योर क्रिएटर कॉल्स यू बैक, यू हैव टू गो एंड देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू टू स्टॉप इट. पीपल लिव इन रिग्रेट कि काश ये क्या होता तो वो क्या होता, तो वो आपके हाथों में नहीं है. तो मैं हमेशा वैसे ही सोचती थी, एक ये थॉट थी मेरी कि मैं किस तरह डेथ को व्यू करती हूँ. अगर कोई मेरा करीबी जानने वाला फैमिली मेम्बर फौत हो गया तो मैं हाउ विल आई रिएक्ट. आई यूज्ड टू थिंक आई वोंट रिएक्ट. सो व्हेन आई लॉस्ट माय ग्रैंड पेरेंट्स, I said, but they were 86, माशाल्लाह बड़ी लंबी ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, and it was their time to go. And अच्छा हुआ they left now before they're completely dependent on someone else. But then when my mother fell ill, or I used to think, when my anyone I was close to, if anyone family member or if my husband or someone died, would I be बिल्कुल ही के बुरी हालत क्या हो जाती मैंने. I said no, I'd be fine. So I don't know why, because I used to think about this. तो जब अम्मी का हुआ, I thought it's okay, it's part of, she lived her life, she had a good life, and this was her time to go. So she left great memories behind in all her glory. और हमेशा उनका ये था कि मैं किसी का मुताज ना रहूँ. तो वो नहीं रही, सिर्फ आखिरी 1-2 महीनों के लिए because she was so weak. But otherwise, I forgot your question again. She had cancer. Yeah. So to see such a strong, independent force of nature be so weak, that was my trigger to be like, I cannot see her weak, or I can't allow her to just die. We didn't think she was going to die. So that's why I said, oh my God, my focus had to shift from Dubai and my private life to just completely focusing on that. But it ended the way it did because it was supposed to. And in the meantime, do I regret anything? No, I'm very happy in life where I am right now, with myself, with my family, with my inner peace. There's a lot of inner peace. There's a lot of positivity. There always has been. And actually वो भर गई ना, जाते जाते वो तुमने, she filled you in with so much love, and you were able to express. उससे बहुत फर्क पड़ता है ना. I think वो मौका मिला ना कि जो बचपन में जो एक था कि मैंने एक लकीर खींच दी है, वो टूट गई ना. वो हदें सा पार करके तुमने बहुत प्यार किया, तो वो आपको भर गई ना. तो वो will last you for your entire life, that those 9 months that you spent with her. क्या क्या ख्वाहिशें की थी उन्होंने?
उनको एक्चुअली सब कुछ खाना था, पर हमने वी वेंट द ऑल्टरनेटिव वे. Okay. तो बहुत ज़्यादा हद से, इफ़ आई there's one regret, I'd say if I had to have a regret, it would be कि जब कोई इतना बीमार है, आई गेस इट वाज अस पुलिंग एट स्ट्रिंग्स के नहीं, बिकॉज बहुत सी मिरेकल केसेस होती हैं, डॉक्टर ने आपको 2 महीने दिए हैं और आप अपनी पूरी डाइट चेंज कर दें, बिकॉज आई एम अ ह्यूज बिलीवर इन योर डाइट, तो इट कैन गिव यू लाइफ अगेन, यू नो, एंड दैट हैपन्स. बट इफ इट्स मेंट टू हैपन, इट विल हैपन, इफ नॉट. पर हमारा ये था कि ट्राई तो करें. तो चीनी, दूध, ग्रेन्स, फलां सारा रोक दिया था, एंड जस्ट वेरी बोरिंग, ब्लैंड, हेल्थी फूड वी यूज्ड टू फीड हर. एंड शी यूज्ड टू बी लाइक, इससे पहले, कैंसर से पहले ये मुझे मारेगा, प्लीज़ मुझे अपना दूध, मलाई, चीनी, जैम, कोक्स, बर्गर सब खाने दें. एंड वी यूज्ड टू बी लाइक नो. उनकी ख्वाहिशें ये थी कि मुझे खाना खाना है. उनको ऑस्ट्रेलिया हमेशा जाना था, बट शी वेंट हज पे जाना था. बट देन व्हेन शी गॉट डायग्नोज्ड और पता चला कि 4th स्टेज है, तो फिर ज़ाहिर है बाबा ने कहा ऑफ कोर्स हम जाएंगे. तो उनकी ये ख्वाहिश थी हज पे जाने की, तो उनकी वो पूरी हो गई. उनको टर्की देखना था, टर्की लेकर गई मैं. फिर ईद, द फॉलोइंग ईद, आई टुक द फैमिली, वी ऑल वेंट. मलेशिया जाना था उनको, मलेशिया कभी नहीं गई. शी गॉट टू वीक, बट अदरवाइज आई थिंक उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई थी इन टर्म्स ऑफ वांटिंग कि बच्चे और शौहर और घर सही रहे. वो जाने के लिए तैयार थी बहुत पहले. आई थिंक हज करके उनका था कि अब मुझे किसी वक्त भी बुला बस लें, टेक I'm मी ready, नाउ. हाँ. बट शी केप्ट फाइटिंग एंड ट्राइंग हमारे लिए. एंड आई थिंक नाहिद आंटी, पटिशा आंटी, इनकी जो करीब her बेस्ट फ्रेंड्स वुड बी लाइक, परवीन, they're fine, you know, don't worry, because ज़ाहिर है she'd confide in them कि you know टिंकी कैसा है, क्या होगा, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये वो. तो because we're all very close to my mother's friends also, so they would just let her know that it's okay. And so it was all very peacefully. Even her funeral, she said, I don't want a big dhamaka, and I don't want 3, 4, 5 दिन का, you know, रोना धोना और grieving and kulls and all that. कुल से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा. जो पीछे रह रहे हैं और पढ़ रहे, वो उनके दिल की ठंडक इन दिलासे के लिए ठीक है. बट माई डीड्स आर विद मी. what I've done, what I've not done, my prayers, my whatever is going with me. So please, no white chadar spread all over, and no, you know, she was very particular about. So her funeral was also not like that. People just came and talked about how wonderful she was. Okay, she was the first person who taught me this, so the first time I tried this, she was the one. And you know, from like old house help to purane neighbors, unke meetha dhar ke, to friends, to students of hers, to her Quran class people, or her yoga students, or friends, or whoever it was, whoever that touched her life, they'd come and share the stories. And I think that was a really बोलूँगी और आगे से जवाब नहीं मिलेगा. So that was a pinch के और जब मेरे बच्चे होंगे, अगर होंगे, तो उनकी नानी नहीं होगी. बस मुझे ये बहुत है, because I grew up with a nanny, and my दादी is 86 माशाल्लाह, and she lives with us now. क्या मिस करती है उनका सबसे ज़्यादा? उनकी प्रेजेंस. एक दफ़ा एक रियलाइजेशन होती कि मैं घर आके माँ बोलूँगी और आगे से जवाब नहीं मिलेगा. सो दैट वाज अ पिंच के और जब मेरे बच्चे होंगे, अगर होंगे, तो उनकी नानी नहीं होगी. बस मुझे ये बहुत है, बिकॉज आई ग्रू अप विद अ नानी, एंड माई दादी इज़ 86 माशाल्लाह, एंड शी लिव्स विद अस नाउ. ग्रैंड पेरेंट्स, आई सी ऑल माई फ्रेंड्स, जिनके बच्चे वो इतने फ्री हैं आजकल, बिकॉज वो अपने बच्चों को थोड़ा पाल पोस के बाई 3-4 months इफ दे नीड टू ट्रैवल या कुछ काम है, you know, my kids at my mother's house. A nanny or a mother takes, you know, after you don't trust anyone but your own mother with your child so much. So it's very selfish कि the freedom that you get कि the kids at my mother's house, and then I can go do something. So I'll miss that. I always wanted her to be a nanny and to have children so that my mother could just be a nanny. Not उनकी खुशी के लिए, just because my mother would be such a super cool nanny. So एक ये था. But otherwise, her presence, she was quite, she had quite an उनकी कौन aura. सी बात है जो you sort of hold close Honesty, to you? straightforward, and लोगों की मदद करना. There's not one person whose life she didn't touch in a way, in a positive way, जहाँ पे she was able to bring change in their life or help them. उनकी ज़िंदगी को ज़्यादा आसान या बेहतर करना. वो सीखा, और वो feeling, और वो देखते ही just the way people are in the house, that aura of hers, that blatant, honest, साफ दिल, साफ नियत वाला जो presence और aura थी, I guess that's what I miss. तो क्या बना दिया इस सारे सफ़र ने सनम को?
आज क्या है सनम, कौन है? हाँ, एक बहुत ही don't put too many words in my own mouth. Just a very at ease, comfortable, confident, not overconfident, but confident in things will work out. जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, और आपके लिए जो भी लिखा है वो हो जाएगा, और जो आप सोचोगे वो होगा. So just a lot of बहुत ज़्यादा positivity, a sense of security, no insecurity, a lot of peace, inner peace, happiness, positivity, and बस अच्छा काम करना है, लोगों को अच्छे तरीके से अफेक्ट करना है काम के थ्रू, and eventually do a lot of work to give back. I think एक दफ़ा ये एक्टिंग का जोश या शौक या आग थोड़ी सी बुझ जाए, then maybe focus totally on social work. You can keep doing both, but I'd really like to get hands down into working with street children. एक्टिविज्म कहाँ से आया था? Again, मैंने देखा है कि कि ये वाला कैरेक्टर नहीं करूँ और वो भी ना करूँ, और मेरे होने से फ़र्क पड़ेगा, और मेरी आवाम मुझे देखती है तो मुझे कोई उनको सबक देना चाहिए. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? वही अम्मी को देख के, ऑफ गिविंग. अम्मी वाज अ टीचर, देन शी हैड टाइम टू. अम्मी ऐसी थी कि अगर किसी के घर पे उनकी बूढ़े माँ बाप हैं, तो वो जब शी'd गो टू अ फ्रेंड्स हाउस और वो देखती थी कि यार इनको मदद चाहिए उठने में, बिस्तर से या बाथरूम में या डाइनिंग टेबल से, तो वो फ़ौरन गिजरी जाके किसी नॉट मैकेनिक बट हार्डवेयर स्टोर से वो मेटल हैंडल्स, स्क्रू ड्राइवर सब लाकर या तो खुद करती थी, और शी'd कॉल वन ऑफ समवन फ्रॉम द हाउस एंड बी लाइक लगाओ हैंडल्स इधर, ताकि आंटी कैन नाउ व्हेन शी इज़ गेटिंग अप वो हैंडल पकड़ के उठ सकती हैं, या उनके वॉकर के नीचे टेनिस बॉल्स लगा दो, बिकॉज वो जस्ट मेकिंग देयर लाइफ जस्ट समथिंग लाइक दैट. और when भिखारी आते हैं गाड़ी पे तो पैसे नहीं देते हम लोग, बिस्किट का एक डब्बा होता है, ग्लूकोज के बिस्किट का डब्बा, उसमें 4 पैकेट बिस्किट्स होते हैं पैकेट के, तो वो देना. नॉट गिविंग द मनी बट समथिंग, डोंट सेंड एनीवन एम्प्टी हैंडेड बट गिव. पोल्यूशन, वही ऑन ऑल माई इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग आई से कि प्लास्टिक की थैली अगर इफ इट्स जस्ट थ्रोन, शी विल पिक इट अप एंड टाई अ नॉट, ताकि जब हवा में वो उड़ रहा है तो किसी झाड़ी में जाके फंस ना जाए, वो ज़मीन पे ही रहेगा फिर उसमें गीठा बांधने. तो just small things like this, unclogging gutters, just calling someone, be like क्या है, just social awareness and helping people. So I think बचपन से, and just helping whoever was around her, जो भी है हाथ में देना और टाइम देना, not so much with money but with her time, physically going out and doing something, helping someone. So I think seeing that हमेशा मेरे अंदर था. So ये मुश्किल नहीं होता अगर कोई इतना अवेयर है, कॉन्शियस है और ज़िम्मेदार है, फिर उसका काम कम नहीं हो जाता, क्योंकि वो फिर हर कैरेक्टर को बहुत उसकी मीमेख निकालेगा. यही तो अभी दीदन में मुझे ये हो रहा था कि मैं दीदन जैसा स्क्रिप्ट मुश्किल है, बिकॉज शी इज़ नॉट सच अ पावरफुल वुमन, शी उसकी एक जर्नी है और वो काफ़ी ऑब्स्टिकल से गुजरती है. And she's an amazing character, Resham, but she wasn't as powerful or as inspiring as my other characters were. And there was a little bit more औरतों पे जुल्म इस कहानी में. मैंने कहा इतना जुल्म मैंने तो कभी ज़िंदगी में इस तरह की औरत नहीं पोर्ट्रे की जिस पे इतना जुल्म हो रहा है, और वो सही जा रही है. But change is necessary, risks are necessary. I was working with a new channel. That was necessary, but I found an amazing director. And एक ये भी होता है, working in the industry you get spoiled, you feel privileged or entitled कि अब मैं एक A-lister हूँ या whatever lister हूँ, तो मुझे सिर्फ फ्लां चैनल्स पे काम करना चाहिए या फ्लां डायरेक्टर्स के साथ के फ्लां प्रोडक्ट्स को endorse करना चाहिए. वो भी कभी नहीं था. So I've gotten a lot of comments. Surprisingly, I'm shocked कि सनम, she can do any drama she wants or work with any channel she wants. Why should we get A+? First of all, that's not true. I don't have any choice I want. Every producers have their own choices, and they all have their own windows and slots and time to groom and take an actor forward or jo bhi, whatever.
So, and it's not necessarily that only the A-list channels are producing the most amazing content. They all have one hit drama at a time, and then the rest are just fillers or whatever. So, I'm always for the underdog. So, if another channel is not up to par but needs a little bit of support to maybe get up there, I'm there for you. Because इसमें मेरे लिए what was my benefit is I'm not some Mother Teresa here, but the director was good, the cast was good, and it was just an interesting, it was an opportunity to be up in the mountains, so it's always fun to shoot पहाड़ों में backdrop जब होता है, just that Diyare Dil was fun, or Sange Marmar उनका was good. अभी they're doing another one in the mountains. वो एक माहौल ही बदल जाता है, and it's just different, and work should always be. That's why जब मैंने कदूरत किया या कोई नेगेटिव कैरेक्टर किया मज़ा आता है, and as an actor you should show your dynamic and be versatile. So like to answer your question, when you said isn't it hard to be so, when you are so socially aware and conscious, yes it does. काम में आप बहुत चिक करते हो. In fact बहुत डायरेक्टर्स दिमाग पकड़ लेते, सर पकड़ लेते कि प्लीज स्टॉप, इतना चिक क्वेश्चन मत करो, जस्ट डू इट. बट आई सेड आई कांट. इट हैज करना चाहिए एक एक्टर को इतना, या सिर्फ कैरेक्टर करना चाहिए, या आप बताएं आपको क्या लगता है? मैं I'm asking you, you're the younger generation and you No, but we see from the work, so much responsibility. आपके body of work से, you know, the other actors that we admire, their body of work, you see कि wow, they've done, you know, कभी बिल्कुल simple washed face, you didn't wear an ounce of makeup in Zindagi Gulzar, and another you got your sari, your hair and your eyes. So, you know, people say, oh, you do this role best or you do that role best, but as an actor you want to explore your talents and your highs and lows and challenge yourself. So I think for me, मैं भी बहुत इस तरह ना, मैं बहुत निकालती थी और बहुत मैं ये नहीं करूँगी और मैं वो नहीं. मैं एक वॉइस ट्रेनिंग की वर्कशॉप पे गई थी ऑगस्ट इन डेनमार्क. ऑल वुमेन, सब पूरी दुनिया के आर्टिस्ट आए हुए थे, माइम आर्टिस्ट एंड जिप्सी सिंगर्स एंड बड़े बहुत अमेजिंग फेस्टिवल था. the most amazing women were there. मैंने वॉइस ट्रेनिंग की वर्कशॉप ली थी. Masters were there to teach you how to use your voice as a tool. तो मुझे पहले दिन उन्होंने बोला कि ये एक सिनेरियो है और ये तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो और ये तुम्हारा क्लाइंट है. तो मैं तो यूँ हो गई ना, I said मैं तो ये नहीं करूँगी. कुछ मुझे मूवमेंट दी थी उन्होंने करने को, तो भाई जस्ट फ्रोज. पहला दिन सारी क्लास देख रही है और मुझे उन्होंने वो मूवमेंट दे दी. मैंने कहा आई वुडंट डू इट. तो वहीं रुक गई ना क्लास. वो सारा वार्म अप के बाद उन्होंने कहा इधर बैठ जाए. इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट दैट कैरेक्टर. So that taught me and that freed me also. But it all depends on your teacher then. The person leading that class. So this is what I'm stuck with my director right now, Amin Iqbal. अगर मुझे कोई बात समझ नहीं आती, मेरे लैक ऑफ एक्सपीरियंस या एक्सपोजर से कह दें, और अगर मैं कहूँ कि ये इस तरह की बातें कौन करता है या ये कौन कहता है, तो अक्सर लोग कहेंगे कि आपको शायद इस तरह का सिचुएशन पेश नहीं हुआ, लेकिन अक्सर ये होता है. या कोई कहेगा बस कर लेना, आपको क्यों, आप जिस तरह मुझसे बात करोगे या आप मुझे जो रैशनैलिटी देंगे, then I can. So if the thing about this director or good directors in my opinion are who have the gift of gab, या जो आपको तमीज़ से, तरीके से genuinely आपको convince कर सकते हैं और आपको दूसरी side या perspective समझा सकते हैं, only so that I can give a genuine performance. आप मुझे बता दो कि होता है इस तरह होगा, ठीक है मेरा काम है एक्टिंग करना, मैं कर लूँगी. What's the difference between feeling a performance and just watching a performance then? So it all depends on the director in a workshop like that or on set, कि आपको किस तरह से direction मिल रही है. बैक स्टोरी कितनी ज़रूरी है? I used to think बहुत ज़रूरी है, because of theatre experience में हमेशा we sit down and we उसकी बैक स्टोरी बताते. लेकिन आई थिंक सीरियल्स में, ड्रामों में इतना वो नहीं होता, बिकॉज यू गॉट सो मच वर्क टू डू. वो आप बन ही जाते हो वो कैरेक्टर, अपना कुछ बना लेते हो. बट फिल्म के लिए प्रिपेयर कैसे करती हो? ऑब्जर्वेशन. आई थिंक एक्टर का 50% आपका जो होमवर्क होता है या काम होता है, इज टू सिट एंड ऑब्जर्व. बिकॉज आपने देखना होता है कि किस लोग जब नर्वस होते हैं तो उनके हाथ कैसे चलते हैं, हम खुद किस तरह करते हैं और आप किस तरह करती हैं, वो किस तरह करते हैं, वो किस तरह करते हैं. सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली आपने अपने बैंक में ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करना होता है, सो यू कैन पुल आउट डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स. ज़्यादा कॉन्फिडेंट लोग अपनी नर्वसनेस को थोड़ा
ऐसे दिखाएंगे कि वो नर्वस नहीं है, बट आपको साइंस नज़र आ जाएंगी. अ नर्वस पर्सन की नर्वसनेस विल बी मोर ऑब्वियस, और यू नो डिफरेंट बैकग्राउंड से किस तरह. मुझे अक्सर कहा जाती है बहुत शहरी रिएक्शन है, शहरी रिएक्शन या बहुत गोरा रिएक्शन है, आप गांव की लड़की हैं, देसी लड़की हैं, वो इस तरह का नहीं करेंगी. एंड हमने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगी. तो किस तरह करेंगी मुझे तो नहीं पता. ओ हाँ, मैंने एक दफ़ा एक औरत को इस तरह करते हुए देखा था. सो यू गो इनटू दैट. सो पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कभी लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जिसको मैं इरेज कर दूँ या मैं मिटा दूँ? कोई रिग्रेट? नो रिग्रेट. नो रिग्रेट. कभी बहुत हंसी हो? हमेशा हंसती हूँ बहुत लाइक दो 1 घंटा या 2 घंटे हंस हंस के बुरा हाल. भाई बहनों के साथ, घर पे, दोस्तों के साथ. आई क्राई व्हेन आई सी फिल्म्स. और हाँ, इट्स नॉट कि मैं पत्थर की बनी हूँ. मैं हर फिल्म में बहुत रोई हो कभी? बहुत रोई भी हूँ, बिल्कुल रोई हूँ. कब रोई? एक्चुअली अनदर अमेजिंग एक्सपीरियंस मेरी काम की वजह से वाज केक के थ्रू. क्योंकि माई कैरेक्टर वॉज गोइंग थ्रू अ डिवोर्स एंड द लॉस ऑफ अ मदर. सो एज ज़ारा इन केक, it was just as smooth, the transition of being married to not being married, to not it being a big deal and discussed in everyone else's business. It was just mine and my partner's business. And then taking care of a sick mother. तो केक में मेरी सारी जो ग्रीविंग करनी थी, जो रोना था, जो भड़बड़ाना था, जो स्ट्रेस लेना था, जो कन्फ्यूजन एक्सपीरियंस करनी थी, वो मैंने केक में कर लिया. एंड केक में मैं छोटी बहन थी, तो मैंने अपनी छोटी बहन को देखा कि उसको क्या फ़ील होगा द लॉस ऑफ अ मदर, क्योंकि बेबी ऑफ द फैमिली तो वो है. तो हल्की सी वो जो पैनिक और कन्फ्यूजन उसमें नज़र आएगी, या बिकॉज आई नो हर कि वो किस तरह रिएक्ट करेगी, वो मैंने अपने आप में लेके ज़ारा में डाला. बिकॉज आमना प्लेड द ओल्डर सिस्टर, सो शी वॉज जरीन का कैरेक्टर वॉज मोर कंपोज्ड, मोर विद इट, संभाल रही थी अपने भाई बहनों को. तो इन द सीन वे आवर मदर इज़ डाइंग, तो हम सारे बैठ के पिया तू गा रहे हैं, या फिर वो रोती है सीन में कि हम लोग डॉक्टर के पास ले जाएं, क्या करें, इनको वेंटिलेटर पे रखते हैं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. तो दैट पैनिक, दैट कन्फ्यूजन, दैट दुख, दैट लॉस, आई थिंक वो मैंने अपने कैरेक्टर में एक्सपीरियंस कर लिया. और मैं पैकअप हुआ केक, मैं लंदन में थी फॉर द लास्ट फ्यू सीन्स, नॉट ऑफ द डेथ सीन बट अनदर सीन. And I flew from London to Karachi, and from the airport I went straight to the hospital, and we let my mother go. So I had just been through a whole roller coaster ride of emotions and calm and all that. और फिर literally इतना वो instant था कि प्लेन से उतर के सीधा हॉस्पिटल गई. And when it happened, of course, you naturally shed a few tears, and anyone, if I cry in a movie, obviously when my mother's not there anymore, I'll shed a few tears, but वो experience catharsis emote करना सारा फिल्म में हो गया था. Is that weird? So, सनम को दोबारा मोहब्बत होगी? Of course होगी, क्यों नहीं होगी. मोहब्बत एक बार नहीं होती. नहीं, मोहब्बत होती रहती है. अभी तक हुआ नहीं है, but I'm sure ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगी. ज़रूर होगी. अभी but I'm not in that phase. I'm not allowing it. You have to allow it. आपके दरवाजे जब खुले होंगे तभी होगा. तो अभी अम्मी के वजह से बंद थे, और सारा मुझे अपना फोकस घर पे देना था. You know, because I've got a father who's widowed, his life partner, जिसके साथ अब बुढ़ापा गुजारना था, और सब बच्चे बड़े करके रिटायर हो के अपना सब करके आराम से अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारनी थी. लेकिन अब वो पार्टनर नहीं है, तो वो बिल्कुल पहली दफ़ा ज़िंदगी में अकेले. तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे अराउंड हो, साथ हो, मेक श्योर दैट ही इज़ बिजी. मेरी दादी जो 56 ईयर्स से लंदन में रहती थी, अब आके शी इज़ मूव्ड परमानेंटली, तो वो भी घर पे. तो एक फॉर्चुनेटली हमें हमेशा अपने नाना नानी के साथ रहने का मौका मिला और उनका ख्याल रखने का मौका मिला. तो पहले इट वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई नानी फॉर मैनी ईयर्स, शी वॉज इल एंड देन शी पास्ड अवे. नाउ इट्स माई दादी हु इज़ वेरी हेल्थी, 86, शी कुक्स, शी क्लीन्स, शी रन्स द हाउस, बट शी इज़ गेटिंग ओल्ड. तो एक वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोचती हूँ अगर मेरी अभी तक शादी हुई होती है, और इफ़ आई री मैरी और वट एवर, मैं घर पे नहीं हूँ और मेरे भाई बहन कॉलेज में, तो टू जस्ट बी माई दादी एंड माई फादर एट होम, दैट विल बी वेरी सैड. सो आई एम वेरी हैप्पी कि वी आर ऑल हियर एंड टाइम इसमें गुजर जाता है. सो आई हैव टू मेक श्योर दैट
दरवाजे बंद in terms of कि भाई बहन घर, you know, that we're okay, because that's important right now. But now I think we've grieved and we're over that. Not that we were ever in a dark hole or anything, but ab May it'll be 2 years. So now doors will open and we'll see what happens. कभी नफरत की? नहीं. कभी नहीं. You've never hated? No. या jealous हुई हो? Jealousy, yes. Jealous that someone got something that I didn't get when I wanted it. Jealous that... लेकिन नफरत नहीं की? नफरत नहीं. No. सिर्फ मोहब्बत? Yeah, also बहुत lucky हूँ मैं. मेरे साथ कभी कोई इस तरह का हादसा नहीं हुआ as such. हमेशा amazing opportunities मिली हैं. I've been so lucky. I count my blessings all the time. You know, whatever जो भी ज़िंदगी में experiences से गुजरी हूँ, हमेशा उसमें से कुछ अच्छा सीखा है. हमेशा उसमें से I've been able to rise above. हमेशा positive उस experience से कुछ हासिल करके कुछ सीख के निकली हूँ. Nothing negative or scary और कभी कुछ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कभी कुछ बुरा नहीं हुआ. और इस तरह के लोग have not crossed my path जिसे मैं नफ़रत करूँ. मेरी एक हमेशा ये दुआ होती है कि जो हो वो obviously मेरे लिए अच्छा हो, and if anything is not good for me वो मेरे पाथ से गुजरे भी ना. और अगर कुछ गुजरा if I'm you know जिस तरह ये एक अम्मी का बीमार होना and to keep a relationship, not an opportunity crossed my path where I had to choose. Now if I was meant to keep this or work on this, don't put me in that dilemma. But अगर आया है then I have to decide what I want to do, and whatever choice I make, I know that the universe is aligned with me and it's all happening for a reason, and I just have to एक अम्मी हमेशा सिखाती थी gut feeling. You know that the brain, the stomach, the gut has more or almost the same amount of neurons that the brain has. तो इसीलिए जो gut feeling एक होती है वो हमेशा, या जब आपका एक तो when you get sad or when your brain is thinking double thoughts, but there's a sinking feeling in your gut that you feel, it's because there's a lot of emotion that your gut is able to feel. और वो खाने से बहुत affect होता है. But my mother always taught us, listen to that gut feeling, and we all have it. वो पहली आवाज़ एक आती है, फिर हम या तो logically उसको analyze करते हैं या emotionally analyze करते हैं. But वो जो पहली instinct है, आपने उस आवाज़ और उस बात को सुननी है, and I think that's one thing I have also done, which is why making decisions is easy, and I'm not so caught. I do overthink a lot, but after I've made the decision. But after first, तो वो I think. और ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी क्या, मैंने अपने आप को प्रिपेयर भी किया था इस सवाल के लिए आपके शोज़ देख के कि हाय मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी ज़िंदगी क्या है. आई डोंट नो वे, ज़िंदगी इज़ समथिंग हमारी चॉइस नहीं थी. मैंने नहीं मांगा था कि मैं इस दुनिया में हूँ. आ गई हूँ तो अब निभाना है अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट पॉजिटिव रहना. लाइफ इज़ टू जस्ट इज़ गोइंग थ्रू द जर्नी. वी आर हियर फॉर समथिंग एंड वी विल रिटर्न from where we came from, and life is that journey, and along the way it's what you acquire for your life afterwards, and it's how much you affect people in a good way, and it's accumulating happiness and giving out happiness. I think that's what life is all about. और मौत ज़िंदगी का हिस्सा, ज़िंदगी की का लास्ट स्टेप. उसके बाद हम कहाँ जाएंगे ये नहीं पता, बट हम एक एनर्जी फोर्स हैं, एंड आप अच्छा करोगे इस ज़िंदगी में तो आप उसी एनर्जी फोर्स का एक हिस्सा बनेंगे. आप बुराई करते रहेंगे तो आप एक किसी नेगेटिव फोर्स की एनर्जी में जुड़ जाएंगे. शायद आप भटकते रहेंगे, या शायद आप जो आई डोंट नो, आई थिंक इट्स जस्ट अ बिग बॉल ऑफ एनर्जी एंड इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव. आई डोंट नो इफ आई गोइंग टू go to gardens and valleys and sit like we are now. I don't know if that's going to happen. But मौत, मैं नहीं डरती मौत से. क्या है डरने का? Like I'm not excited. I'm very curious. कि what is it that people are so obsessed with in this life? And you know, religion really divides people and really takes you sometimes away from your true self. It is the opium of the masses. And then it's important for balance, and it is important for being centered.
But so many different stories and so many religions. So I'm curious. शौक है जानने का दूसरे religions के बारे में कि वो क्या कहते हैं वैसे ही as literature. तो हर religion में मौत एक ज़िंदगी का हिस्सा है, एक unavoidable चीज़ है जिससे हमने गुजरना है. और सब यही सिखाते हैं कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ आखिर में, और बुरा करोगे तो बुरा ही होगा. अब वो अच्छा बुरा क्या है ये नहीं पता, but I'm confident that I hope I've been a good human being, and I hope I have enough time to continue or be a better person, so that when I die I can be in peace. So थैंक यू मेरी जान. thank you. थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया. उन्होंने कहा कि तुम गाते हो, तो मैंने कहा जी. तुमने कहा ठीक है, फिर मेरे घर तुम गाओगे, मैं लोगों को कुछ इनवाइट करता हूँ. मैंने कहा मारेंगे.